Before starting a session, I just want to make an announcement that it's a request to all the participants to please keep your microphone off during the session to ensure a smooth and uninterrupted lecture. And once ma'am concludes her lecture, we will open the floor for Q&A session, and you will be given the adequate time to interact. After today's session, a feedback link will be shared in the chat box, and the same will be sent to your registered email ID. With ma'am's prior permission, let us begin the session. Ma'am, may we begin? Yeah, we can begin. Yes. Okay. Thank you, ma'am. Good evening to all learned advocates, legal professionals, law students, and distinguished guests joining us today. I am Advocate Rajiv Kumar Yadav, and I will be your host for the today's session. On behalf of entire team, Law Learning Bench, I welcome you to this important discussion on SLP drafting and its nuances. As we all know, Article 136 of Constitution of India gives the Supreme Court extraordinary power to grant special leave to appeal. But understanding how to invoke this power is a critical skill for any practitioner. So before we moving ahead, let me briefly introduce our platform, Law Learning Bench. Law Learning Bench is a legal education initiative dedicated to bridging the gap between the classroom theory and the courtroom reality through our specialized program, Courtroom Advocacy Skill Training Program, known as CASTP. We basically focused on skill-based training, advocacy to help legal professional excel into the real-world practice. The driving force behind this initiative is Mr. Mithilesh Kumar Pandey, the founder of Law Learning Bench. We really thankful him for his vision in organizing this session on a specialized and important topic. Now, it's my distinct honor to introduce our esteemed speaker, Ms. Preeti Nair ma'am, who is an advocate on record, Supreme Court of India. With over 8 years of extensive experience, Ms. Nair has handled complex matters involving insolvency, bankruptcy court, intellectual property rights, commercial matters, and arbitration. As a Supreme Court practitioner, she possesses the precise expertise needed to guide us through the technicalities of drafting and filing a special leave petition. So, Miss Nair, we are eager to learn from your experience, and I now invite you to take the floor and share your insights and experience on the art of SLP filing. Ma'am, the virtual platform is all yours. Thank you so much. Uh, I'm immensely grateful to Law Learning Bench for giving me an opportunity. So I'll start right away. So, how I plan to go about this webinar? First, I would discuss the scope and ambit and extent of the jurisdiction of the Honorable Supreme Court under Article 136 of the Constitution. So that you have the requisite acumen and the context to draft out a special leave petition. After that, we will pick up a High Court judgment, uh, and we would analyze the issues arising out of the High Court judgment, and then we will see how we can draw up the questions of law, how we can draw up the grounds. Okay, so I would be demonstrating the drafting of the questions of law, grounds, etc. I would also take you through a special leave petitions format, which is already filed. Um, I might also invite you, to volunteer to draft a line or two of questions of law or grounds. I would be guiding you every step along the way. After all, it is for you to learn, so please do not shy away. Okay. Then after that, we would draft the SLP. So this is how I plan to go about the webinar. I want it to be an extremely interactive session where I'm not the only one to speak. Your participation, your feedback, your involvement is extremely valuable to me. Okay. So I will start. Do I have the screen sharing permissions? Yes, ma'am. Sure. Give me a moment. Can everybody see the screen? Yes, ma'am.
It's visible. 136. Can somebody read this provision? Yes, sure, ma'am. Article 136 of Constitution of India. Special leave to appeal by the Supreme Court. Start with, notwithstanding anything in this chapter, the Supreme Court may, in its discretion, grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence, or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India. Second, Second clause, nothing Yes. in the clause 1 shall apply to any judgment, determination, sentence, or order passed or made by any court or tribunal constituted by or under any law relating to the armed forces. Okay. So this is a discretionary jurisdiction. So generally, whenever a statute confers a right to appeal, we can always claim that as a matter of right. But when it comes to the appellate jurisdiction of the Honorable Supreme Court under Article 136, it is not a right. We cannot claim it as a matter of right. It is entirely the discretion of the Honorable Supreme Court. It starts with a non obstante clause, notwithstanding anything in this chapter. In this chapter means which chapter? It is chapter 4 of the Constitution, Union Judiciary. So chapter 4 के अंदर apart from article 136 also 132, 133, 134 में the Constitution provides the power to Supreme Court to hear appeals from cases. So notwithstanding anything in those sections, under 136 we can file a SLP by the Supreme Court. So let us quickly take a look at what is 132, 133, 134. 132 is appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from high courts in certain cases. So सिर्फ high court के against appeal file किया जा सकता है in 132 और only with respect to cases जिसमें से arises a substantial question of law as to the interpretation of constitution. ठीक है. Otherwise no. Also इसमें certificate from the high court required है for leave to appeal. Then there is article 133. यहाँ पर भी सिर्फ हाई कोर्ट से अपील फाइल किया जा सकता है only in regard to civil matters. Again, the case should involve a substantial question of law of general importance, and in the opinion of the High Court, the question needs to be decided by the Supreme Court. Only then we can file appeal. Then 134. यहाँ पर हम Supreme Court में appeal file कर सकते हैं in against High Court final order judgment only in regard to criminal matters. तो अगर आप देखेंगे 132, 133, 134 में बहुत restrictions है कि किन conditions में हम appeal file कर सकते हैं to the Supreme Court. But under Article 136, there are no such restrictions. It is extraordinary jurisdiction of the Supreme Court. The power of the Honorable Supreme Court is absolute, unqualified. It is a residuary power. Okay. So notwithstanding anything in this chapter, the Supreme Court may in its discretion grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order. और अगर आप 132, 133, 134 देखेंगे in the similar chapter, it is not from any judgment. The judgment has to be final, or the decree has to be final, or the order has to be final. But SLP में ऐसा कोई restriction नहीं. Interlocutory order के against भी हम कर सकते हैं. But of course, जितना ये vast है, जितना ये absolute और unqualified है, Supreme Court ने अपने आप पे self-imposed restrictions तो लगाई हुई है, so that backlog of cases हम avoid कर सकते हैं. So even though the jurisdiction itself creates no fetter, the Supreme Court is not generally inclined to hear appeals from interlocutory orders. Okay, there are many other self-imposed restrictions that I'll discuss. So from any judgment, decree, determination, in any case or matter passed by any court or tribunal in the territory of India, direct magistrate की order से भी हम Supreme Court जा सकते हैं. The jurisdiction does not create any fetter. But again, यहाँ पे self-imposed restriction है Supreme Court की कि we are expected to, exhaust our other available remedies. And it is not encouraged that हम directly SLP के अंदर जाए. But jurisdiction itself does not create any fetter.
देन आर्टिकल 136(2) में ये बोलते हैं कि मिलिट्री ट्राइब्यूनल या ट्राइब्यूनल फंक्शनिंग अंडर लॉ रिलेटिंग टू आर्म फोर्सेस, यहाँ पे 136 अप्लाई नहीं होता, दैट इज एक्सक्लूडेड. So I hope everybody understood the bare provisions. Yes, ma'am. Not just I don't want just Mr. Rajiv Kumar Yadav to speak. बाकियों को भी, if they are able to follow, not able to follow. Okay. All right. So special leave to appeal किन matters को लेके हम file कर सकते हैं? Substantial question where, you know, manifest injustice has been done, grave injustice has been done, there is grave travesty of justice. तो इन matters में हम SLP file कर सकते हैं. जब law एक aspect को लेके uncertain है, different high courts के divergent views है, इन matters को लेके SLP file कर सकते हैं. But special leave petitions largely are filed to redeem individualized cases. Redeem justice in individualized cases. तो generally ये practice deprecated रहता है, encourage नहीं रहता है, ठीक है? तो we should be able to prove कि, you know, एकदम grave travesty of justice हुआ है, या questions of law arising of general public importance, है ना, या it pricks the conscience of the court. तो ऐसे matters में generally special leave petitions are filed. So there are two stages, okay? एक first stage is when we seek leave to appeal. जब तक हमको सुप्रीम कोर्ट लीव नहीं देती टू अपील, तब तक वो अपील में कन्वर्ट नहीं होता. Once the leave is granted, our case is registered as an appeal. Okay? और जरूरी नहीं है कि हमने जिन क्वेश्चंस को लेके SLP फाइल किया है उन्हीं क्वेश्चंस को लेके हमको लीव मिले, ठीक है? लीव में भी ग्रांटेड, यू नो, लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके? और अगर हमको एडिशनल क्वेश्चंस कुछ रेस करना है, we can raise it at a later stage also after notice to the respondent. और उन क्वेश्चंस पे, वो एडिशनल क्वेश्चंस पे, the respondent must be given an opportunity of being heard. So, टाइम फ्रेम, वैसे टाइम फ्रेम नहीं मेंशन्ड है, but Supreme Court has the power to regulate its own practice and procedure, for which purpose there is Supreme Court rules. तो उसमें सारे प्लीडिंग्स के रिस्पेक्ट पे टाइमलाइंस है. इट इज 90 days फॉर SLP. एंड अगेन हमने पढ़ा था कि इट कैन बी फाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑर्डर, एनी डिटर्मिनेशन, एनी सेंटेंस, एनी जजमेंट, ठीक है? एनी का मतलब ओनली जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव. ओके? और सपोज लेजिस्लेचर बोलता है कि, यू नो, एन ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर अथॉरिटी और अ ट्राइब्यूनल इज फाइनल, उन मैटर्स या उन ट्राइब्यूनल या उन अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी SLP मेंटेनेबल है. फॉर एग्जांपल रेलवे रेट्स ट्राइब्यूनल है, इसके स्टैट्यूट में लिखा हुआ है कि द ऑर्डर पास बाय द रेलवे रेट्स ट्राइब्यूनल इज फाइनल, बट इवन देन अ स्पेशल लीव पिटीशन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दिस ट्राइब्यूनल. Such is the power of the Supreme Court under Article 136. And as we discussed, हमारा कोई right नहीं है इसमें. It is the discretion of the court. अब SLP कौन कौन फाइल कर सकता है? क्या सिर्फ पार्टीज टू द केस SLP फाइल कर सकते हैं? The answer is no. अगर मेरे को एक हाई कोर्ट ऑर्डर चैलेंज करना है और वो पर्टिकुलर केस में मैं पार्टी नहीं हूं, बट आई एम एडवर्सली इफेक्टेड बाय दैट ऑर्डर, मैं SLP फाइल कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एक विक्टिम है, विक्टिम गुजर चुका, ठीक है, एंड केस चलता रहा, द जजमेंट रिजल्टेड इन एक्विटल. So the son of the deceased victim can file SLP, and that SLP was held to be maintainable. In fact, SLP इन limited questions को लेके भी entertain किया हुआ है कि जहां पे
there was a order passed by the High Court, and there were certain adverse remarks against the Chief Minister. So it was held that the state has the locus standi to file SLP for the limited purpose of expunging the adverse remarks against the Chief Minister, even if the state was not party to the High Court order, the High Court judgment, or the case from which the High Court judgment was passed. Okay. Now, when there are concurrent findings of fact, एक particular fact है, for example, एक पॉक्सो मैटर हो गया, उसमें एक finding है कि the victim is below the age of 18, so she is a child within the meaning of POXO Act, या वो 18 साल से ऊपर है, और ये consistently lower courts ने भी, high court ने भी upheld किया हुआ है. So it is a concurrent finding of fact. अब आपको सुप्रीम कोर्ट में जाके ये फाइंडिंग को रिवर्स करना है. Will the Supreme Court entertain such a plea? The answer is yes. Even if concurrent findings of fact है, the Supreme Court can entertain the plea. अगर इस तरह का जो finding है that has been arrived by overlooking crucial piece of evidence, so much so that a contrary conclusion is capable of being arrived, then the Supreme Court might look into it and might even reverse this finding that has been consistently upheld by the lower courts. Okay. And of course, Supreme Court special leave petition level तक जाके evidence analyze दोबारा नहीं करती. ठीक है? So it does not generally reappreciate evidence unless we are able to show कि ऐसा कोई crucial piece of evidence है जो overlook हो गया नीचे वाले stages में. Okay. Now, effect of dismissal of special leave petition. Listen to this very carefully. This is very important. Okay. और यहाँ पर कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है, रिपीट करवाना है तो रिपीट करवा लेना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार ये स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देती है तो उसका इफेक्ट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्पेशल लीव पिटीशन इज डिसमिस्ड इन लिमिनी, लिमिनी मतलब एट द वेरी थ्रेशहोल्ड, without going into the merits, without going into the reasons, without giving any reasons, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एसएलपी डिसमिस कर देती है. वो मेरिट्स को लेके कुछ नहीं बोलती, कोई रीजन नहीं देती है. तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द एपेक्स कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड. देयर इज नो नीड फॉर द एपेक्स कोर्ट टू गिव एनी रीजंस. ठीक है. तो जब एसएलपी इन लिमिनी एट द वेरी थ्रेशहोल्ड डिसमिस हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने करेक्टनेस ऑफ द जजमेंट अगेंस्ट विच द एसएलपी हैज बीन फाइल्ड उसको लेके कोई कमेंट नहीं किया है. इट हैज नॉट गॉन इनटू द करेक्टनेस और प्रोप्राइटी ऑफ द इम्प्यून जजमेंट एंड इट जस्ट डिसमिसेस द एसएलपी इन लिमिनी. इट क्रिएट्स नो रेस जुडिकाटा and it creates no law. It is not a law for purposes of Article 141 of the Constitution. What is Article 141 of the Constitution? The law declared by the Supreme Court is binding on all courts and tribunals in the territory of India. So it creates a binding precedent. But जब SLP in limine dismiss हो जाती है, it is not a law for the purposes of Article 141. ओके. और जस्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी डिसमिस कर दिया डजंट मीन कि जो जजमेंट हमने चैलेंज किया है उसका वो इनकरेक्ट है या करेक्ट है या वो मेरिटोरियस है या इट डज नॉट हैव एनी मेरिट. इट डज नॉट मीन एनीथिंग. ठीक है. और द पार्टी ऑलवेज कैन टेक रिकोर्स टू ऑल्टरनेटिव रेमेडीज इवन इफ द एसएलपी अगेंस्ट द ऑर्डर इज डिसमिस्ड. वो हाई कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The party can file a writ, या वो same court जा सकता है to get the impugned order reviewed again. Okay, so no bar just because the SLP is dismissed. ठीक है. And the High Court decision does not merge with the order of the Supreme Court. तो इसका मतलब not merge मतलब we can always have recourse to other remedies. ठीक है.
Now, what if Supreme Court reason देती है? It is a speaking order. It is a reasoned order. Then what? अगर reasoned order है, तो it is law for the purposes of Article 141. Okay, it creates binding precedent. Non-reasoned order है, तो नहीं. But in either case, the High Court order does not merge with the Supreme Court order, and the party can always have recourse to alternative remedies. एक बार स्पेशल लीव पिटीशन फाइल हो जाती है और फिर आप उसको विड्रॉ कर लेते हो, तो कैन यू फाइल SLP again? The answer is no. You have to take the liberty from the court to file a fresh SLP once again. Okay. तो एक बार स्पेशल लीव पिटीशन डिसमिस हो जाती है, you cannot file a fresh SLP against the same decision. रेस जुडिकेटा लग जाता है वहां पे. नाउ एक अब ये हो गया डिसमिसल एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ लीव टू अपील. व्हाट इफ लीव टू अपील ग्रांट कर दिया, आपका केस अपील रजिस्टर हो गया. नाउ आफ्टर दिस द सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस द SLP. जो मैंने पहले डिस्कस किया उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया? ओके, ये भी ध्यान से ही सुनना. तो एक बारी ऑन मेरिट्स सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देती है SLP after your case is registered as appeal, after the leave has been already granted. After that, if the SLP is dismissed, then the decision appealed gets merged with the decision of the Supreme Court. Then the original decision cannot be challenged. You cannot file a writ petition. Yes. Somebody raised the hand. Vaibhav Jain. Please ask. PPT प्रेजेंटेशन मिलेगा वेबिनार का? नहीं, बट ये वीडियो अपलोड होगा आई थिंक लॉ लर्निंग बेंच के यूट्यूब चैनल पे, राइट? तो यू कैन ऑलवेज, हाँ. So, if you have any doubt, you can ask. I think he just wanted to ask if PPT would be available. If you have any doubt and network disruption, you can write in chat box also. So can I continue? Vaibhav Jain, any other question? Okay. So एक बारी appeal dismiss हो जाती है. Okay, after your case is registered as appeal, then the original decision gets merged with the High Court decision, with the Supreme Court decision. Then you cannot have recourse to alternative remedies. उसके बाद आप writ petition नहीं फाइल कर सकते, उसके बाद आप उसी कोर्ट में जाके रिव्यू नहीं लगा सकते. Once the Supreme Court decides your appeal or dismisses your appeal, that judgment, that order is final. Okay, and binding. सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट अपने आप पर इम्पोज करती है डिस्पाइट द एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड पावर इट हैज अंडर 136. और एक हमने पहले से डिस्कस कर लिया कि यू हैव टू एग्जॉस्ट योर अदर रेमेडीज दैट यू हैव. स्टैट्यूट ऑलरेडी अपील का राइट देती है, या रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में. आपके पास और कोई रेमेडी है तो प्लीज फर्स्ट एग्जॉस्ट द रेमेडी बिफोर coming directly to the Supreme Court. Don't come directly to the Supreme Court. Delay, we discussed. Okay. Then relief. My question was, okay, Vaibhav Jain has asked a question again. Was SLP is dismissed as withdrawn? Could it be filed again? Yes. It cannot be filed again. You have to take liberty from the Supreme Court to file it again. Only if the Supreme Court grants liberty, you can file a fresh SLP. Okay? Hope I answered your question. So, relief. So, under this, yes. Thank you. So, the Supreme Court has the power to mold the relief in a special leave petition according to the circumstances of a case. तो इसका मैं एक example दे देती हूँ. There was this case, Badrinath versus Government of Tamil Nadu, जिसमें a person was appointed in junior scale IAS, and then he was promoted to the selection grade, but he was not promoted to the super time scale.
Government rejected his petition. High Court rejected his petition. It came before the Supreme Court. तो अब सुप्रीम कोर्ट के आगे क्वेश्चन था कि मैं क्या रिलीफ, इनको कैसे रिलीफ दिया जाए, क्या ये दोबारा गवर्नमेंट के पास रिमांड वापस भेज दिया जाए टू रिकंसिडर हिज रिक्वेस्ट, या डायरेक्ट हम मैंडमस का ऑर्डर इशू कर दे and direct the government to promote him. So here the Supreme Court decided कि instead of remanding it back, we will issue an order of mandamus. We will issue mandamus and direct the state to elevate him or promote him to super time scale. So इस तरह से Supreme Court can mold the relief to do justice between the parties. Again, अब लॉ अगर लोअर कोर्ट्स को और हाई कोर्ट को, बद्रीनाथ, it is Badrinath versus Government of Tamil Nadu. The citation is 2008 SCC 395, AIR 2000 SC 3243. Okay. So generally जब lower courts को और high court को law discretion देती है कि you decide certain aspects, Supreme Court उस discretion के साथ interfere नहीं करती. But if the discretion is exercised arbitrarily, unreasonably, in a perverse manner, then Supreme Court might interfere. So for example, natural justice को ध्यान में रखते हुए order नहीं दिया, ठीक है, or the courts below acted without jurisdiction, or it did not appreciate the evidence or materials on record or the submissions made. तो ऐसे मामलों में the Supreme Court can interfere. तो as I discussed before, Supreme Court evidence appreciate नहीं करती, but कुछ exceptional cases में appreciate करती है, ठीक है. If the lower evidence entirely, it was supposed to be it was not supposed to be overlooked, or it misread, it misinterpreted, it misconstrued the evidence, है ना, and it was a crucial piece of evidence, और वो evidence को देख के लगता है कि एक दूसरा conclusion arrive करना possible है, तो ऐसे में तो Supreme Court might interfere and again reappreciate that evidence, ठीक है. या दो courts of appeal के inconsistent findings है, तो again यहाँ पे या दो courts of appeal, they did not arrive at a decision which is based on law, then the Supreme Court will interfere, ठीक है. Yes, अब ये important है. What if there is an entirely new plea? आप नीचे वाले कोर्ट्स में वो प्ली लेते नहीं है, आप पहली बार सुप्रीम कोर्ट में वो प्ली ले रहे हैं. Will the Supreme Court be inclined to accept your plea? The answer is yes, in limited circumstances the Supreme Court might. तो वो क्या circumstances है? For example, your new plea is founded on facts, not on law, just on facts. The Supreme Court is not generally inclined to accept it. That fact is arising plainly from the record, जो already Supreme Court के records में है, ठीक है, materials, उन्हीं में से एक नया fact निकल के आ रहा है. The Supreme Court might be inclined to accept that, ठीक है. अब ऐसा कोई new plea based on fact है और उसके लिए नया evidence या new material देखना पड़ रहा है, तो Supreme Court is not generally inclined to entertain such a new plea. And of course, in some cases में the question will always arise कि आपने क्यों नीचे वाले कोर्ट में इसको नहीं लिया, ठीक है. Mixed question of fact and law है. For example, there is novation or alteration of contract. एक contract नए contract से substitute हो गया. It's a mixed question of fact and law. The Supreme Court is not inclined to, admit an entirely new plea based on mixed question of fact or law. What if it's a pure question of law? The Supreme Court is inclined to accept a pure question of law, a new plea raised for the first time in the Supreme Court. You did not take it before the courts below. The Supreme Court might accept. The question of law goes to the root of a matter, the root of a cause, forming a foundation of the claim. It is inclined to accept it. Okay. या ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं जहां पे आप नीचे वाले कोर्ट में एक प्ली लेते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होता, या एक्सेप्ट होता है या नहीं होता, और आप हाई कोर्ट में जाके उसको प्रेस नहीं करते.
फिर बाद में आप क्या वो सुप्रीम कोर्ट में आप आके प्रेस करते हो, even then Supreme Court might, is inclined to accept such a new plea. So for example, there was this case, preventive detention case tha. वहां पे for the first time Supreme Court accepted a new plea that was raised because the plea pertained to non-consideration of the detinue's representation by the government. Preventive detention का case है, it is a case concerning the liberty of a person. और वहां पे जहां पे गवर्नमेंट ने वो डेटेन्यू का रिप्रेजेंटेशन कंसिडर नहीं किया, ये प्ली वाज इम्पोर्टेंट, दिस प्ली वाज इम्पोर्टेंट, इट वाज फेटल टू द केस, तो दैट वाज एडमिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. और क्रिमिनल केसेस में ऐसा कोई फाइंडिंग ऑफ फैक्ट है दैट विशिएट्स द होल ट्रायल एंड इट इज शॉकिंग द जुडिशियल कॉन्शियंस ऑफ द कोर्ट, सो द सुप्रीम कोर्ट माइट एक्सेप्ट सच अ प्ली. तो ये सारे रूल्स एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें एक्सेप्शंस है. Okay. So this is done. We have discussed the scope and extent of the power. Now, the High Court judgment that we will discuss, ताकि हम SLP draft कर सकते हैं. पहले मैं आपको एक format दिखा देती हूँ कि how a special leave petition looks like. Okay. So generally what happens कि जब भी कोई young lawyer या advocate उनको दिया जाता है कि आप ये draft कर दो, मैंने जनरली देखा है द फर्स्ट थिंग दैट दे डू कि एक फॉर्मेट देना इसका. तो दैट इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट. ओके, फॉर्मेट तो हमेशा लास्ट की चीज होती है. पहले वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लॉ, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ टू विच द केस पर्टेन्स. हम वो लॉ जाकर देखेंगे, बेयर एक्ट पढ़ेंगे, कमेंट्री टेक्स्ट बुक निकालो, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दैट लॉ, है ना, अंडर व्हाट कंडीशंस द सच लॉ कैन बी इन्वोक्ड. हाँ, तो वो आप पहले जाकर देखो, यू एग्जामिन दैट फर्स्ट, देन यू लुक एट द रिकॉर्ड्स, ड्रॉ अप अ क्रोनोलॉजी ऑफ फैक्ट्स. ऑब्वियसली लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स फाइल में बना होगा, उस पे नहीं रिलाई करना है, अपना क्रोनोलॉजी ऑफ डेट्स बनाओ एंड गिव रेलेवेंट पेज नंबर्स ऑफ द मटेरियल्स और द डॉक्यूमेंट्स डिसाइड्स दैट. तो क्रोनोलॉजी बनाने का इंपॉर्टेंस ये है कि आप कोई केस फाइल से पढ़ते हो या आपको कोई ब्रीफ करता है, ठीक है, तो आप एक स्टोरी का एक पिक्चर आप विजुअलाइज करते हो या अंडरस्टैंड करते हो, क्रोनोलॉजी ऑफ फैक्ट्स एंड इवेंट्स बनाते हो, उसके बाद आप वो स्टोरी समझते हो. नाउ योर आउटलुक टुवर्ड्स द केस इज एंटायरली ट्रांसफॉर्म्ड. उसमें से ऐसे निटी ग्रिटीज निकल के आएंगे जो आपके ध्यान में नहीं रहेगा व्हेन यू सिंपली रीड योर केस और फाइल लाइक अ नॉवल. क्रोनोलॉजी बनाने के बाद आप होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द केस लेते हैं, तो आपका आउटलुक टुवर्ड्स दैट केस एंटायरली चेंजेस. उसमें ऐसे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड इंटीग्रिटीज निकल के आते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा. ओके, यू वुड बी एबल टू मास्टर योर फैक्ट्स इवन बेटर देन योर सीनियर. आई कैन अश्योर यू दैट. थोड़ा मेहनत का काम है, ओके, बट यू बिकम द मास्टर ऑफ फैक्ट्स. So now I will share the format. So format is the last thing to go about it. You open a blank. Yes. Ma'am, there is a question asked by Yes. Vaibhav Jain. Yes. He's basically want to ask that a difference between substantial question of law and question of law for the purpose of SLP. But I think he want to ask that how we frame the question of Yeah. law so that it can ensure the Supreme Court standard. Yeah, I'll discuss that when I discuss the SLP. Okay. The question of law होता है. Article 136 में नहीं लिखा है substantial question of law. ऐसे नहीं है. वो substantial question of law as to the interpretation of constitution, that is in article 132 we saw. उसमें बहुत specifically लिखा हुआ है, but article 136 में ऐसा नहीं है. But of course if there is substantial question of law of general public importance,
divergent views of the High Court on a certain law is uncertain, manifest injustice has been done, it pricks the conscience of the court, है ना? So a grave travesty of justice has been done. Generally SLP in cases के लिए है. Understood? तो आप यही ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करेंगे. होप दैट इज क्लियर मिस्टर वैभव जैन. How to find out overruled judgments on a particular point by researching. इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता, वो तो हमको पढ़ना पड़ता है. So any other question? और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके. सो हाँ, तो फॉर्मेट इज द लास्ट थिंग टू गो अबाउट इट. आपको रिकॉर्ड्स अच्छे से पढ़ना है, वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ देखना है, इम्प्यून जजमेंट देखना है कि एग्जैक्टली इस इम्प्यून जजमेंट में नैरो डाउन ऑन व्हाट यू वांट टू चैलेंज. ठीक है? एंड देन ओपन अ ब्लैंक वर्ड फाइल, नो फॉर्मेट. ड्रॉ अप द क्वेश्चंस ऑफ लॉ, ड्रॉ अप द ग्राउंड्स, और कोई पिटीशन बना रहे हो, ड्रॉ अप द आर्ग्यूमेंट्स, केस लॉस. बाद में फॉर्मेट सेट कर लेना. ओके? सो डोंट इमीडिएटली आस्क फॉर फॉर्मेट, आप ये ड्राफ्ट करो, फॉर्मेट देना, नो. ओके? Now I'll take you through the format of a special leave petition. Everybody can see the screen? Okay. What is the scope of review petition after dismissal of SLP? Give me a moment. तो हम यहाँ पर review jurisdiction is a separate concept in itself. Okay. Of course, special review can be filed after SLP is dismissed. We will focus on SLP in this session. If you want me to discuss the review jurisdiction, I will discuss that in detail, maybe in the subsequent sessions. Okay? How to argue before a point of social justice in favor of women against a biased judge. आप मुझे कोई केस रेफरेंस दो कि आपका पॉइंट ऑफ सोशल जस्टिस क्या है against a biased judge. You're already assuming that the judge is biased. Why do you think the judge is biased? Mr. Rana Ram? Patriarchal thought. Which judge is biased? Now, I cannot take a session based on your preconceived notion कि a judge is biased. मैं आपको इतना बता सकती हूँ how to argue a point of law if, you know, in favor of the woman based on the issues arising out of the case, the legality of it. So please specific questions पूछिए. In maintenance case. Okay. That is also quite a generic question. Ma'am, there is some time constraint, so it will be Okay. better that if we will moving forward with our session. We will take the Q&A in the end of the Okay, session. fine. Yes, ma'am. मैम मेरा रिक्वेस्ट ये था कि जैसे मैं खुद पार्टी इन पर्सन गया था सुप्रीम कोर्ट में, हाँ जी. हाई कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने मेंटेनेंस के ऑर्डर में एक्सपर्टी ऑर्डर दिया था. तो हाई कोर्ट ने भी मेरे को ये कहा था कि जो आपका ऑर्डर है ये सोशल जस्टिस है, आप यदि वाइफ को मेंटेनेंस दे रहे हो तो कोई बात नहीं, ये तो आपको देना ही है, लेकिन हम एक्सपर्टी ऑर्डर को साइड नहीं कर सकते भले ही आपको ना सुना गया हो. मैं उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गया था, पार्टी इन पर्सन ही अपीयर हुआ था.
वहां पर मेरे को उन्होंने सेम चीज कही। मैंने बोला था कि सर हमने ना तो क्रॉस एग्जामिनेशन किया है ना। We can take this discussion later. Okay. ओके, लेकिन I यदि will answer कोई your जज, question. सपोज कीजिए यदि कोई जज ये ओके नहीं है तो सोशल जस्टिस है, हम मेंटेनेंस को बढ़ा देंगे, आप उसका आर्गुमेंट आप कर लो, आप नीचे जाके क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन दे देंगे। We can take this discussion later, please. ओके, I will answer your question. Okay. Okay. Give me a moment. So I hope everybody can see my screen. So court का नाम, whichever jurisdiction it is, civil appellate jurisdiction or criminal appellate jurisdiction. Then special leave petition, criminal या civil या जो भी है, nomenclature. Then नीचे you write कि आप कौन सा order को challenge कर रहे हैं, order का date, it is passed by which high court, और उसका case number नीचे. Then cause title. So this is the cover page. ये है listing pro forma. This is standard. Okay. Then this index. तो इंडेक्स में दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. पहले सिनॉप्सिस आता है, उसके बाद आप इम्प्यून्ड ऑर्डर लगाते हैं जो आपको चैलेंज करना है. उसके बाद आपका जो मेन स्पेशल लीव पिटीशन है वो लगता है विद एफिडेविट. उसके बाद अपेंडिक्स, जिस लॉ प्रोविजंस पे आप रिलाई कर रहे हो उसका एक्सट्रैक्ट हम प्रिंट करके लगा देते हैं. देन सारे एनेक्शर्स. उसके बाद फाइलिंग मेमो, वकालतनामा, मेमो ऑफ पार्टीज. दिस इज द ऑफिस रिपोर्ट ऑन लिमिटेशन. दिस इज स्टैंडर्ड. यहाँ पे आप लिखते हैं कि whether petition is within time or there is a delay. If it is barred by time, then there is a delay. ये आप खाली छोड़ सकते हैं. Then कौन सी जजमेंट और ऑर्डर है उसका डेट यहाँ पे लिख देना. Rest of everything is standard, pretty standard. This is the listing pro forma. यहाँ पे आप सारे डिटेल्स डाल देना, हाई कोर्ट का और मैटर का, पार्टीज का. दिस इज केस क्लासिफिकेशन. तो ये केस क्लासिफिकेशन इज अवेलेबल ऑन द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट. सो अगर ये बेल का केस है तो उसका एक सर्टेन नंबर असाइंड है, वो आपको लिखना है. दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. So all the case details are filled here in the listing pro forma. And then there is synopsis. Then there is list of dates. यहाँ पे annexure mark होती है, बॉडी में नहीं annexure mark होती है. लिस्ट ऑफ डेट्स में annexure mark होती है और ब्रैकेट में पेज नंबर्स. Then memo of parties. Okay, in the high court, in the supreme court. In the high court, respondent. In the supreme court, respondent number 2. ऐसे. अब हम आ गए मेन बॉडी ऑफ द पिटीशन पे. आई होप इतना तक सबको समझ में आ गया. मैम थोड़ा स्लो स्क्रॉल कीजिए. ओके फाइन. सो यहाँ पर वी राइट द petitioner by way of this petition under Article 136 of the Constitution respectfully seeks special leave to appeal against. आपका जो भी जजमेंट और ऑर्डर है उसका डेट, कौन से हाई कोर्ट ने उसको पास किया. फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट पटना इन क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन, जो भी केस नंबर है वो डालना है. इन विच रिस्पोंडेंट नंबर 1, आपके क्लाइंट को जो भी रिलीफ ग्रांट हुआ नहीं ग्रांट हुआ वो लिखना है. इन विच द रिस्पोंडेंट नंबर 1 वाज ग्रांटेड बेल. ठीक है. Then second, no LPA writ appeal lies against the impugned judgment before the honorable court or any other courts.
दिस इज स्टैंडर्ड। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चंस ऑफ लॉ। The following questions of law arise for the consideration of this court. और अब सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ डाल देंगे। फिर ये डिक्लेरेशन इज स्टैंडर्ड। दिस इज इन टर्म्स ऑफ रूल, सुप्रीम कोर्ट रूल्स। एक पहला डिक्लेरेशन है कि इसके अगेंस्ट इसी केस को लेके कोई और स्पेशल एसएलपी नहीं फाइल किया गया है, वो वाला डिक्लेरेशन। फिर सेकंड डिक्लेरेशन ये कि एनेक्शर्स जितने भी है दे आर ट्रू कॉपीज ऑफ द प्लीडिंग्स एंड द डॉक्यूमेंट्स विच फॉर्म द रिकॉर्ड्स ऑफ द हाई कोर्ट। फिर आगे आपका ग्राउंड्स, इसमें आप केस लॉ भी डालेंगे अपने ग्राउंड्स की सपोर्ट पे। ओके ओके सो अब इंटरिम रिलीफ जो आप सीक करना चाहते हैं वो आप उसका ग्राउंड्स अलग से डालेंगे। फिर मेन प्रेयर, मेन प्रेयर में आपको यहाँ पे मेन प्रेयर में हर एसएलपी में एक ही तरह का प्रेयर लिखा जाता है, दैट द कोर्ट ग्रांट्स द स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट द पर्टिकुलर जजमेंट एंड ऑर्डर यू आर असेलिंग एंड पास सच फर्दर ऑर्डर्स। जैसे दूसरे कोर्ट्स में करते हैं, आपको अपने आप से और कोई प्रेयर नहीं फॉर्मुलेट करना है, एक ही प्रेयर होता है, दो ही प्रेयर होता है। एक तो आप कोर्ट को प्रे करते हैं कि द कोर्ट ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील, और दूसरा पास सच फर्दर डायरेक्शंस एज द कोर्ट डीम्स फिट। ये जो स्टैंडर्ड प्रेयर सब हर जगह होता है, दैट्स ऑल। यू कैन नॉट फ्रेम एनी अदर प्रेयर ऑन योर ओन। देन इंटरिम रिलीफ, interim relief may be same, you pray for that particular interim relief, okay, and pass any other order the court deems fit. ये final. Then there is certificate, ये AOR का certificate होता है कि कोई additional facts या grounds नहीं ली गई हैं। यहाँ पे there was some additional fact, तो वो मैंने mention किया है कि हाँ there is an additional fact that I'm relying upon, तो वो मैंने यहाँ पर italics में लिखा हुआ है। And further, the AOR certifies that the copies of the documents annexures attached to the SLP are necessary to answer the question of law in the petition or to make out the grounds urged in the SLP. And that this certificate is given on the basis of instructions by the petitioner, authorized by the petitioner whose affidavit is filed. So ये AOR certificate भी remains standard. ये affidavit है, और ये है हाई कोर्ट के सामने जो मेमो ऑफ पार्टी है, ये वो है। Then there is वकालतनामा. So everybody saw it. Okay. So time हमारे पास बहुत कम है, but I selected Kuldeep Singh Sengar's judgment to discuss with all of you, ताकि इस judgment के against हम देखेंगे कि how to draw up the questions of law and grounds. So I think हमारे पास इस session में time नहीं है, but next session में we are going to do that. We will discuss Kuldeep Singh Sengar's case and we will analyze the issues, and then we will draw up the questions of law and the grounds. I will live demonstrate it for you, and then I might also invite you to volunteer to draft. I will guide you. Okay, so this is what I plan in the next session. Yeah. Thank you so much, ma'am, for such a wonderful and insightful session. And you have just made this complex issue so much easier. It's my humble request to all the participants, if you have any doubts, you can post your questions in the chat box and you can ask also.
AOR, please, आज आप अपने questions please keep it confined to the theme. How to become AOR? I graduated in 2025. अभी तो 4 साल बाकी है आपको AOR के लिए, 4-5 साल. आप ट्रायल कोड प्रैक्टिस कीजिए एंड वर्क हार्ड ऑन योर केसेस. इस कोई मतलब शॉर्ट मेथड नहीं है. yes, ma'am, there is one question asked by Rana Ram ji. हाँ जी. How to challenge a constitutional provision or law-related legislation and what's precautions to be taken? I don't. आपको जो लॉ चैलेंज करना है उसका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज करना है. फाइंड आउट व्हाई इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मैं जनरल आंसर नहीं दे सकती. So why do you think that it goes against certain provisions of the constitution? मैं आपको एक, आप लॉयर हैं राणा राम जी? Are you an advocate? Because this session is meant for advocate. You're advocate. You're a practicing advocate. And there is another question Okay. that can new facts be raised in an SLP? ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था. अगर एविडेंस न्यू मटेरियल देखना पड़ेगा और आपने नीचे वाले कोर्ट्स में वो फाइल नहीं करी है, then the question arises कि आपने नीचे वाले कोर्ट्स में वो एविडेंस जिसके बेसिस पे आप नया फैक्ट निकाल रहे हैं, why did you omit to file that evidence? क्या वो सब्सिक्वेंटली आपको पता लगा कि ऐसा एविडेंस एग्जिस्ट करता है और वो बाद में वो बाद में निकल कर आया एविडेंस? Okay, ma'am. Okay. I'm also a advocate. I have a question that if we are drafting any SLP, the question of law is the most relevant thing. That how do we ensure that it will basically support the standard of Supreme Court so that it will be decided on merit? We will discuss that when I discuss the Kuldeep Singh Singer's judgment. Yeah. उसी का एग्जांपल लेके I'll be telling you. और जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, तो जनरली when the question of law is a question of law of general public importance, law उस एरिया में uncertain है, unclear है, या different high courts की divergent views है, वो सारे are fit questions to be raised before the Supreme Court. या कुछ एविडेंस ऐसा है, क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस है, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, मिसकंस्ट्रू किया गया, उसको ओवरलुक किया गया, और वो एविडेंस एनालाइज करके आपको लगता है कि हाँ एक कॉन्ट्ररी कंक्लूजन रीच किया जा सकता था या इनजस्टिस हुआ है बिकॉज दैट क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस वाज ओवरलुक्ड. तो उन मैटर्स में आप क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज कर सकते हैं. ठीक है. या लॉ कंसिडर नहीं किया है जिस तरह से कंसिडर करना चाहिए था, जिस तरह से स्टैट्यूट कहता है, जिस तरह से बाइंडिंग प्रेसिडेंट कहता है, वैसे नीचे वाले कोर्ट्स ने उस तरह से नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑर्डर नहीं पास किया है, देन यू कैन फाइल SLP. Okay. उन मैटर्स पे आप क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज कर सकते हैं. जैसे कि किसी ने पूछा कि अगर क्या फैक्ट, क्वेश्चन फाउंडेड ऑन फैक्ट्स, अगर आपको उसमें न्यू मटेरियल, न्यू एविडेंस, एंड दैट एविडेंस इज अराइजिंग सब्सिक्वेंटली, जब आप ट्रायल कोर्ट में एविडेंस फाइल कर रहे थे उस वक्त नहीं था, इट अरोज सब्सिक्वेंटली. ठीक है. तो इट इज अ वेरी गुड ग्राउंड टू फाइल न्यू एविडेंस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, अगर वो बाद में निकल कर आया है ना, and it is adversely affecting your rights, your claim is founded upon that and it is going to the root of the matter, तो आप सुप्रीम कोर्ट वो एंटरटेन कर सकती है. बट ऐसा कोई एविडेंस है आपने नीचे वाले कोर्ट में नहीं फाइल किया है ना, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाके पहली बार आप वो कैसे लगा सकते हैं? You were simply not diligent enough to do it, है ना, at the time when it was to be done. If you have a genuine reason that it could not have been within your knowledge, तो ठीक है, डाल सकते हैं. If a question of fact arises plainly from the record, ऑलरेडी रिकॉर्ड में है और वहां से नया फैक्ट निकल के आ रहा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट माइट बी इंक्लाइन टू एक्सेप्ट.
Okay, ma'am. तो अब ये जितना मैंने एसएलपी का स्कोप डिस्कस किया ना, वो सब मैटर्स में यू कैन ड्रॉ अप अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. Yeah, sure, ma'am. हाँ. I think, ma'am, there is no more question, so we can conclude here. Okay, fine. Yeah, ma'am, as we conclude here, I just want to express my deepest gratitude to you for sharing your invaluable experience, time, and wisdom. Your guidance on the important topic that nuisance of Article 136 is incredibly helpful for everyone. And I also thank Law Learning Bench and Mithilesh Kumar Pandey sir for providing this learning opportunity. But before we signing off, I have an exciting announcement that Law Learning Bench. I will just take 1 or 2 minutes to announced the Law Learning Bench program, KSTP program, Courtroom Advocacy Skill Training Program. And regarding this, I am just sharing my screen also. Is my screen visible to all? Yes. Let's start with KSTP Law Learning Program because I have already told that what is the objective of Law Learning Bench? Law Learning Bench is an educational institution for practical legal training, and this institution is basically designed to bridge the gap between legal education and courtroom practice. Because we are not here to teach the law, but to build the advocates. Through this program, you will explore the practical courtroom advocacy skill and strengthen your legal education. Because through law school, it is possible that you can strong your foundation, theoretical foundation. You have very much ample understanding of legal principles, statutes, and case laws. But we do not learn that how we are going to act in the court. We do not know the real practice after the law school. That is why we are coming with this KSTP program, because any of all of you are law students of different years and many of are practicing, but how many of you are confident enough to present a case before a judge on a very first day? Because there is a courtroom expectation. When you are going to court, you are representing, you are a mouthpiece of your client, and the interest of the client is the main thing that you need to preserve. So for that court expectation, you need to be prepared, because what we are learning in the law school is basically a contrary to the real and ideal cases. In real life, the facts will be complex and incomplete. The evidences will be different. The documents may be missing and inconsistent. And it requires application, analysis, and strategic decision making. And many challenges and complexity will come to the young advocates, like procedural confusion, paperwork pressure, because even a small drafting and filing error can delay justice and can prejudice the interest of your client. Struggle for credibility, confidence challenge, and ethical crossroad. So we need a proper planning to master, to be an advocate, that how we are going to apply the law, how do we adapt, how we are going to prepare even court filing, whether it's online or offline, post listing scenario. That is why we Law Learning Bench the foundation with a hand-on skill, working alongside with your academic institution to develop you well-rounded legal professional and ready for the challenge of practice. And through this application, we are going to translate your knowledge into effective courtroom strategy. Even you are going to profound with the professional drafting, through the real simulation classes and real drafts, which are drafted by real advocates and also argued. So on that basis, you are going to learn through this KSTP program. What is the benefit that you are getting after this program? You will get the real world clarity. You will go through the real courtroom operation and reinforce your understanding and better understanding than others. This KSTP program is structured moduled in a 12 modules program, which is clearly aligned with your curriculum. This program basically bridges the gap between the courtroom practice and class theory.
ठीक है? This program is of 12 weeks and it is not only for law students, it is also for the practicing advocates, because even the practicing advocates do not know the real advocacy skill, what comes, what challenges they have to face, and after making the same mistakes, they stagnate their growth. So that is why we held these classes weekend, and we are also providing the structured learning materials, so you do not need to go here and there for the study materials. And the main thing is that you are going to learn through the experiences of the senior advocates, former judges, legal experts who had been at your position. So one side doesn't fit at all. That is why we are also providing you live expert-led session where you will have a one-on-one mentor session and you will clarify all your doubts. And apart from this, we will have the interactive workshops, webinars, seminars, and at the end of the day, we will evaluate every student so that we will get to know that how we are going to benefit them. And after being the part of this program, the essential skill that are going to adopt at legal mastery, proficiency in research, even apart from this advocacy skill, we are going and great opportunity to work over your communication skill, because in representing before the court, the communication skill matters the most. How are you going to persuasive skill going to persuade the judge and the client? Okay. Even we are also working on the stress and time management. I am honorable to introduce the advisory board under whose guidance you are going to learn. Honorable Sri K.G. Balakrishnan, Honorable Sri Ajay Rastogiri, Honorable Sri S.R. Yadav ji. And these are the modules which are specifically designed for an advocate. Like we are going to cover the effective oral skill, effective drafting skill, trial strategies, and even the court drafts from a trial court to higher court, evidence handling, objection practice, and at the end of this program, we are also giving the mock trials and performance review from our side. And after completion of this program, we will provide you certificate, letter of recommendation, and you are going to see the change in yourself, and you are going to be transformed from a legal professional to an advocate. And we are also going to give you the opportunity of placements. So we are here to help you and becoming a skilled advocate. Thank you so much, ma'am. And I just want to conclude here and give a very much deepest gratitude for giving your valuable time. And Thank you other so much. participant also, thank you so much for your active engagement. It's my humble request to all participants, please fill the feedback form that has been provided in the chat box, and the same we will also send to your registered email ID along with the SLP format. Thank you so much, sir. And Thank of you so course, much, in everyone. the Thank you so next much, ma'am. session, we will be continuing with this session. This session is not over. Okay. Yes, ma'am. So we will be discussing the Kuldeep Singh Senghor's judgment, and we will be learning to live draft here. Yeah, So sure, ma'am. that is the cream fulcrum of this session. This is supposed to be the fulcrum of the session, and it has to be carried over to the next session owing to a time constraint. Okay, so every session. Thank you. Yeah, sure, ma'am. Okay, thank you so much, ma'am. Again, have a wonderful evening to you all. Thank you.